Achha, can you all hear me? Hello? Guys, can you all hear me? Yes, sir. Okay. Achha, let's just do one more question. Achha, guys, have we done this question before? ये क्वेश्चन पहले किया हमने? Okay. And have we done this one? Okay. You sure ये question नहीं किया? ठीक है. So let's do this question. अच्छा यार, before I start this question, देखो एक चीज प्लीज समझो. इसमें जो चीज पर यूनिट है, ठीक है, so if some cost, something is given per unit, वो आमतौर पे वेरिएबल होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है. लेकिन जैसे इसमें प्रोडक्शन लेबर की ये सैलरी है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू यूनिट, दिस इज रिलेटेड टू वीक, कि ये हफ्ते की कॉस्ट इतनी है. तो जो पर वीक कॉस्ट होगी वो आमतौर पे फिक्स्ड होगी, बिकॉज उसको यूनिट से फर्क नहीं पड़ रहा. सही है. सो वीकली कॉस्ट जैसे ये है, ये वीकली है. All these costs that I've highlighted with green, since they relate to 1 week and they're not related with any units, these costs would be the fixed costs. So let's read this question. And Costello Limited is a manufacturing business that produces one product, that is a wooden bookcase. All production is sold to just one customer, that is Tando PLC. Costello Limited is contracted to produce 220 bookcases for the customer each week at a contract price of $30 per bookcase. ठीक है. So हमारे per week जो हम unit बेचते हैं, this is the units that we sell per week,
and at a price of this. This is our selling price. Employees are paid a fixed salary each week plus a bonus based on output. Okay. Then we have been given the costs. Costs incurred by Costello Limited are as follows. We need to find out the weekly break-even point in units. So, और 5 mark हैं इसके, which is great. So, पहले फॉर्मूला लिखते हैं. ब्रेक इवन को यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला होता है. It's fixed cost, and when we divide that by the contribution per unit. So, पहले fixed cost figure out करते हैं. So, I think हमारी जो fixed cost है, वो है the accumulation of these 4 things that I had highlighted, these salaries, and this machine hire, administration cost, and property cost. So if you guys could please add these up, I think that is 345 plus 280 plus 150 and 500 and 260. So हमारी fixed cost कितनी है? Could anyone please add these up? This is 1535. ये आ गई fixed cost. फिर हमें चाहिए contribution per unit. So contribution per unit के लिए हम अपनी selling price में से माइनस करेंगे हमारी variable cost per unit. So I think selling price हमारी थी $30 की. Selling price है $30. सही है. और अब जो variable costs हैं वो ये per unit वाली हैं. So that is 22. 22 का मटीरियल है, 50 पैसे का बोनस या 50 सेंट्स का बोनस है प्रोडक्शन में और 25 सेंट्स का बोनस है इन फिनिशिंग. So if you add these 3 up, this is 22, 22.5 and 22.75. So ये आ गई variable cost. So this will become $7.25 per unit. So fixed cost भी पता चल गई, contribution भी आ गया. Using this, we can easily find out our break even in units. So I'll just divide my fixed cost by my contribution per unit. So break even in units कितना आ रहा है? $211.7. So we will write it down as 212 units. ठीक है, 212 यूनिट्स पे ब्रेक इवन है. आगे बढ़ते हैं. Calculate the weekly margin of safety in units and in revenue. That's easy. Margin of safety in units का formula होता है total units minus break even units. So total units कितने हैं weekly?
वीकली टोटल यूनिट्स हैं 220, ब्रेक इवन यूनिट्स हैं 212, सो 220 minus 212, that is 8 units. ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई इन यूनिट्स। फिर हमें चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी in sales revenue. It's going to be the same total units minus break-even units, and we'll just multiply this with selling price. So total units minus break-even units into selling price, जो कि 30 है. So 8 into 3, इसका आंसर आ जाएगा $240. ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई इन सेल्स रेवेन्यू। फिर हमें एक एनुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। तो मैं इसको 4 मार्क की इज्जत दूंगा। प्रॉफिट स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट होता है सेल्स में से माइनस होती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ 4 मार्क की स्टेटमेंट है, मैं वेरिएबल कॉस्ट एक लाइन में कर रहा हूँ, अलग अलग शो नहीं कर रहा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसको माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सो सेल से स्टार्ट करते हैं। वीकली हम बेच रहे हैं 220 यूनिट्स, ये टोटल यूनिट्स हैं वीकली। सेलिंग प्राइस है 30 की, ये एक वीक हो गया। अब क्योंकि एनुअल हमें बनाना है, तो साल में कितने वीक्स होते हैं भाई? साल में वीक्स होते हैं 52। सो 52 वीक्स, इससे पूरे साल का निकल जाएगा, ठीक है। ये एक हफ्ते के यूनिट्स थे और हमें साल का निकालना है, तो मैंने 52 से मल्टीप्लाई किया है। सो प्लीज मल्टीप्लाई दिस, तो कितना आ रहा है। और वेरिएबल कॉस्ट होगी 220 यूनिट्स हैं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 22, दिस इज 343,200। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 22.75 into 52, सही है। सो वेरिएबल कॉस्ट भी बता दो। टू सिक्सटी सही है। कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है? यार हमने 52 से बाय द वे मल्टीप्लाई इसलिए किया है, 52 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है बिकॉज हम पहले जो वर्किंग कर रहे थे सारी, वो सारी वर्किंग थी वीकली, सही है। और अब हमें वर्किंग करनी है एनुअल, साल की। तो पुरानी जितनी भी वीकली वर्किंग थी उसको एनुअल वर्किंग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 52 से मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज साल में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। जैसे पहले हमें फिक्स कॉस्ट गिवन थी 1535, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फिक्स कॉस्ट थी ना 1535। और ये सारी फिक्स कॉस्ट, ये सारी वर्किंग पर वीक की थी, इफ यू कैन सी। तो इस वीकली फिक्स कॉस्ट को अगर मुझे साल की फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 1535 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 52 से, जो कि कितना होगा? 79820। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस हुआ, ये आ गया हमारा प्रॉफिट, विच इज या प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लो।
ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। लेट्स मूव ऑन। डी पार्ट आई थिंक अच्छा है। डी पार्ट में लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स। अच्छा, डू यू गाइस नीड टू कॉपी दिस? प्लीज टेक योर टाइम। This is part A. You can also copy this. Yeah, have you guys copied so that we can move on to the next part? Because this part is the directors of Costello are concerned about the future prospects of the company. Employees have spare capacity and the machine is not being fully utilized. So yeah, the company has been approached by a large retailer asking for a quotation to produce 100 bookcases each week. So up till now, ये जो हमारी कंपनी है कॉस्टेलो लिमिटेड, इसका सिर्फ एक ही कस्टमर था, डैंडो पीएलसी, जिसको ये पर वीक 220 बुककेस बना के देता था। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये थी कि फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि इनका प्रॉफिट साल का बहुत कम आ रहा है, $15,000 आ रहा है। So इसी वजह से they were concerned about the future prospect of the company, and keeping that in mind, they were recently approached by another large retailer which is asking them to provide 100 bookcases each week. तो ये इनका दूसरा कस्टमर हो जाएगा और इसको 100 bookcases चाहिए per week. Now, the retailer requires the bookcases to have a different finish that would add $2.25 to the direct material cost. ठीक है, मतलब पहले जो मटेरियल कॉस्ट पड़ती थी उसमें 2.25 ऐड हो जाएगा. Calculate the selling price that the directors should charge the retailer in order to achieve a 20% contribution to sales ratio. अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सीन है. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब है कि भाई जो भी सेल्स हो उसका 20% कन्वर्ट होना चाहिए इनटू कंट्रीब्यूशन. सही है, ये सेलिंग प्राइस होनी चाहिए. ठीक है,
तो इस अगर सेल्स का 20% कंट्रीब्यूशन होगा, इसका मतलब है सेल्स का बाकी 80% हैज टू बी द वेरिएबल कॉस्ट। सही है, बिकॉज ऑब्वियसली सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है तो बचता है कंट्रीब्यूशन। तो अगर कंट्रीब्यूशन को 20% होना है तो इसने 80% होना चाहिए, तो ही वो 20% होगा। ठीक है, सो देखते हैं। हमारे पास पहले एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट आती थी, ये वेरिएबल कॉस्ट आती थी 22.75। ठीक है, पर बुक केस की वेरिएबल कॉस्ट थी 22.75। हमने इन तीनों को ऐड किया था ना, 22, 0.5 और 0.25। सो ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 22.75, और अब इसको जो बुक केस बनाना है उसमें मटेरियल में ऐड होगा 2.25, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी $25 पर यूनिट। ये आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है तो बड़ा सिंपल सीन है। मेरी वेरिएबल कॉस्ट 25 है, जो कि मुझे पता है परसेंटेज वाइज है 80%। अभी हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए वो होगी 100%। सही है, इस सी एस रेशो से काम ये आया, इस सी एस रेशो से फायदा ये हुआ कि मुझे पता चला कि अगर कंट्रीब्यूशन 20% होना है तो उससे मुझे पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट फिर 80% होगी। ठीक है, अगर ये कंट्रीब्यूशन 30% होता तो फिर वेरिएबल कॉस्ट 70 होती। मैं यहाँ पे 70 लिखता। सही है, अब बेरा प्लीज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेलिंग प्राइस निकालो। आई थिंक सेलिंग प्राइस आ जाएगी 25 into 100 divided by 80। कितनी आ रही है सेलिंग प्राइस? 31.25 की सेलिंग प्राइस होगी। ये भी प्लीज कॉपी कर लो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सो ये नए प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट इज 25 और इसकी सेलिंग प्राइस इज 31.25। Guys, be done? Having considered the situation, the directors have decided to quote the price of 29 per book case। अच्छा भाई, हालांकि इनको हमने प्लान किया था हम सेलिंग प्राइस कोट करेंगे 31.25, लेकिन इन लोगों ने सेलिंग प्राइस कोट कर दिया 29 की। चलो कोई बात नहीं। टू द रिटेलर, the additional work will involve employing one more additional member of staff at a weekly salary of 140। तो इससे ना मेरी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट को बढ़ा रहा है। सही है, बिकॉज वीकली देना पड़ रहा है ये। The contract with Dendo PLC to produce 220 book cases per week would still be maintained at a price of 30 per book case। मतलब डैंडो वाला सीन सेम है। ये जो नया कॉस्टेलो, ओ सॉरी, ये जो रिटेलर आया है इसको हम सेलिंग प्राइस ऑफर कर रहे हैं 29 की। ठीक है,
Now we need to prepare a statement for Cost Allo Limited to show the total annual contribution and total annual profit if the retailer accept the quotation. ठीक है, तब हमें सेम काम करना है, सेल वेरिएबल कॉस्ट वाला। फर्क ये है इस दफा दो कस्टमर्स हैं, सही है, तो जरा सेल निकालते हैं। डैंडो पीएलसी को हम बेचते थे 30 का, इसको बेच रहे हैं 29 का। डैंडो के पर वीक थे 220 बुक केसेस, इसके पर वीक है 100, और साल में वीक कितने होते हैं 52। तो ये हमारे दो कस्टमर्स की आ गई सेल मिला के, डैंडो की ऊपर लिखी है और ये रिटेलर की मैंने नीचे लिखी है। इससे टोटल सेल आ जाएगी, कितनी आ रही है, इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट थी 22.75 थी डैंडो के लिए, इंटू 220 इंटू 52, और इसकी वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 25 इंटू 100 इंटू 52। सेल्स बता दो, वेरिएबल कॉस्ट बताओ। सेल आ रही है 494,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 390, 260, इससे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 103,740। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। सर फिक्स कॉस्ट पहले वीकली फिक्स कॉस्ट थी 1535, ये पहले थी, और अब फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, 140 से बढ़ रही है। तो आई थिंक अब हमारी हफ्ते की फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 1675 या 1675। दिस विल बी द फिक्स कॉस्ट पर वीक, और हमारे पास साल में 52 वीक्स होते हैं, तो इससे फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 87,100। इससे हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ जाएगा 16,640। ठीक है, ये कॉपी कर लो।
Advise the directors whether or not they should proceed with the additional order of the retailer. Give reasons for your answer. I think they should definitely proceed क्योंकि इसके बाद साल का प्रॉफिट हो गया 16,000. इससे पहले साल का प्रॉफिट था 3,000. ठीक है, तो इनका प्रॉफिट इतना बढ़ है और उसका रीजन बहुत सिंपल है. रीजन सिंपल ये है कि फिक्स कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ी. सही है. और नए प्रोडक्ट से जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो सबका सब प्रॉफिट में जा रहा है. सही है. बिकॉज जब हम पिछला ऑर्डर बना रहे थे विद डैंडो पीएलसी तो प्रॉफिट तो तब भी हो रहा था. इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट कवर हो रही थी. लेकिन अब इस नए ऑर्डर का फायदा ये है कि फिक्स कॉस्ट क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही इससे, तो जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो सबका सब प्रॉफिट है. सो आफ्टर द एडिशनल ऑर्डर the profit of Costello PLC has gone up to 16640 from an annual profit of 3120. Since there is no major increase in fixed costs, all contribution earned is converted into profit. Hence, they should proceed with the additional order. Guys, please copy this down and यार ये कॉपी करो. अब हमारी एक चीज रहती है सिर्फ ब्रेक इवन में, वो है आवर प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, जो मैं तुम लोगों को कल क्लास में पढ़ाऊंगा. ठीक है. सो अदर देन दैट, ठीक है, हमारा ब्रेक इवन ऑलमोस्ट खत्म है. फिर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे. सही से यू गाइस प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ब्रेक इवन. इस बुक में जितने भी हैं, अगर तुम लोग का कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है. And as soon as you copy this, you can leave. This is it for today.